सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जय फूड एंड ट्रैवलर। आज हम आए हैं क्योनिक्से 1 डे ट्रिप। सो यहाँ पर मेनली 2 एक्टिविटीज़ है। वन इज़ बोट ट्रिप टू द चर्च एंड सेकेंड वन इज़ द येनरबान। सो आज हम येनरबान और जेनरबान यूज़ करने वाले हैं और बाद में हम लेक के पास जाएंगे। तो अभी हम आ गए जेनरबान स्टेशन पे। और अभी हम जाने हैं जेनरबान पे। हलवा उबेस सो गाइस, अभी हम आ गए लास्ट स्टेशन पे और यहाँ पर हमारे पास है हाफ एन आवर। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है और आप यहाँ पर खाना खा सकते हो और ब्यूटीफुल माउंटेन्स व्यू एंजॉय कर सकते हो। अगर टाइम है तो वहाँ पर आप चल के भी हाइकिंग कर सकते हो, लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है। स्की लवर के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है। So here is the view from the other side. Panoramic restaurant.
souvenir shop. Jingle bell, all day. Oh, my God, this is right. What is it today? And jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle all day. All of this is right. What is it today? And jingle bell, jingle all day. Oh, my God, this is right. What is it? And jingle bell, jingle all day. Oh, my God, this is right. सो ये थे हमारे जेनरबान की विजिट. अभी हम जा रहे हैं क्योनिक्से. सो गाइस अभी हम आ गए हैं क्योनिक्से पे. So from here you can do the boat trip to the st.Bartheloma church. I'll put this video link in my description box. From there you can see how the st.Bartheloma church look like and how's the boat ride. It's really nice experience if you do this boat trip. I definitely recommend it to do that. तो अभी यहाँ पर स्ट्रीट में जा रहे हैं. This street looks also beautiful. આ બિયર ગાર્ડન છે. પિયર ગાર્ડન છે. અમારી પિયર ગાર્ડન છે. તારે આ પાક આપતા દવા છે. દવા પીવે છે બધા. અત્યારની દવા છે. યપ. ત્યાંની દવા. યર દવા daddy. યર દવા. મારી દવા યર. યર દવા. So guys, if you are coming here, maybe you can think to make the boat tour and Jennerbahn boat trip. You can do it in one day. But important is to come little early so you can spend enough time at both places. Otherwise it's really difficult because boat tour is also end around 5 o'clock. And let me see, bye bye. Bye bye. So guys, you can also do hiking or wandering here. So now we are going back where we park our car. So I hope you liked my video and it was nice visit to Jennerbahn. Then see you guys in